Sure. Yeah, so we can start now. Am I audible, right? I am audible, right? Okay. So, good morning, everyone. Welcome to the Sensex expiry final trading session of the week. And the flow of the session would be we'll start with some all the three indices. Will give the levels on that. Then we'll take few stocks queries, and then we'll definitely share some intraday ideas or CDI ideas, that is conviction delivery ideas. सो स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। कल आज भी हमने देखा निफ्टी थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हुआ है, ऑलमोस्ट 50-60 पॉइंट्स नीचे खुलने के बाद थोड़ी सी रिकवरी आई है मार्केट में। सो द इमीडिएट सपोर्ट फॉर निफ्टी इज 22,400 एंड 22,300। सो आज 22,400 का लेवल रिस्पेक्ट कर रहा है फिलहाल। सो आई थिंक दैट द रिकवरी शुड कंटिन्यू, बट आज एक मेजर इवेंट है wherein we have the bi-monthly RBI policy which is scheduled today. So volatility will be there. So I think positions should be light today because swings हमें देखने मिलेंगे दोनों बैंक निफ्टी एंड निफ्टी में. So the RBI policy is at 10 a.m. So keep your positions accordingly. थोड़ा light रहेंगे तो भी better है. I think let the event pass by and then see how the market reacts to the statement that the governor makes. So सपोर्ट निफ्टी का 22,400 22,300 है, और इमीडिएट रेजिस्टेंस है 22,650 एंड 22,750. सो कल निफ्टी एंड बैंक निफ्टी निफ्टी एंड सेंसेक्स दोनों ने अपना नया लाइफ टाइम हाई बनाया है, बट बैंक निफ्टी थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहा है. उसका लाइफ टाइम हाई है 48,636 which it has not crossed yet, but comparatively yesterday bank nifty was stronger than nifty. So why it was stronger? It was because the elephant, which is the private sector bank, which has the highest weightage in HDFC in bank nifty as well as nifty index. So HDFC Bank kal almost after their quarterly provisional numbers was up almost 2.5%. And even आज भी it is holding well on a down day, wherein Nifty is down almost 60 points, but HDFC Bank is holding the market as well as the index afloat. So HDFC Bank and PSU में SBI, these are the two very strong counters as of now, and will suggest that large cap के साथ रहे, wherein the margin of safety is more, wherein say for example HDFC Bank, Bajaj Finance, TCS, Infosys, even Asian Paints. So large cap के साथ बने रहेंगे तो better है, wherein the margin of safety and the comfort on valuation front is also there. So comparatively you should be on the large cap side rather than mid cap. Select mid caps rotationally move होते रहते हैं, as in आज ship defense ship stocks momentum में है, wherein Cochin and GRSCs and the Mazgaos थोड़े momentum में है. तो every day the flavor of the mid cap is changing, so rotationally it is doing, but large cap में ज़्यादा margin of safety है, so we will be with large cap stocks in HDFC Bank, TCS, Infosys as I mentioned. Even Bajaj Finance is looking good, थोड़ा base formation है, and after that provisional numbers wherein they have reported that the almost 30-35% AUM growth है, so the growth is there in Bajaj Finance as well as the margin of safety. So be with the counters that I've mentioned. So बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी में इमीडिएट सपोर्ट लेवल है 47,777, विच इज अ वेरी क्रूशल सपोर्ट. अगर जब तक ये होल्ड कर रहा है 47,777, we can see a bounce back towards 48,250 and next 48,500, or even the lifetime high, which is 48,636. So we expect till 47,777, which is a magical number. जब तक ये होल्ड कर रहा है उसके ऊपर है बैंक निफ्टी. आई एम टॉकिंग अबाउट स्पॉट लेवल. सो जब तक ये लेवल होल्ड कर रहा है वी एक्सपेक्ट बाय ऑन डिक्लाइन स्टैंड्स ऑन बोथ निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी. बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली आज भी आउट परफॉर्म कर रहा है, वेर इन इट इज ट्रेडिंग फ्लैट टू माइल्डली पॉजिटिव.
So all because of HDFC Bank. So I think till 47,777 is held. We expect a bounce back towards 48,250 and 48,500, and even it can make a lifetime high going forward next week. एंड सेंसेक्स की अगर बात करें जिसकी एक्सपायरी है आज, सो सेंसेक्स का इमीडिएट सपोर्ट है 74,000 जो राउंड फिगर है, नेक्स्ट 73,750, while immediate resistance है 74,500 which is the lifetime high which it hit yesterday, 74,501 जो lifetime high कल hit किया था सेंसेक्स ने. तो इमीडिएट रेजिस्टेंस वहाँ बन रहा है, एंड नेक्स्ट इज 74,750. वीकली वीवैप की अगर बात करें सेंसेक्स की, तो वीवैप है 74,005 and we are almost 130 points above the weekly VWAP. So which generally indicates that bias should be positive and decline should be bought into, intraday decline should be bought into uh, as per expiry per se. So फिलहाल बाय एंड डिक्लाइन स्टैंड है तीनों में, निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स. सपोर्ट बेस्ड बाइंग करनी चाहिए बैंक निफ्टी 47,777 एंड निफ्टी 22,400. सो ये था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स. Stock ideas, I think we have given one CDI idea on Poonawalla, I guess. Yeah, we have given one CDI idea on Poonawalla FinCorp, wherein technically अगर बात करें तो I'll just check the charts. It has given a breakout from a downward sloping trend line. So we feel अभी फिलहाल 492 है, so we can buy Poonawalla FinCorp at current market price. It's a CDI idea, so conviction delivery idea, wherein we have to hold the position for at least 5 to 7 days minimum. So I think 492, 491 है अभी, तो current level पे we can enter into Poonawalla FinCorp, wherein we can keep a stop loss at 474, while target can be placed at 530 and 535 plus levels. So a CDI idea, conviction delivery idea, we are sharing on Poonawalla FinCorp. It has given a downward sloping trend line breakout on 3rd April, after which it has almost risen to 505. थोड़ा सा पुल बैक आया है ऑन एंड ऑन सपोर्ट बेस्ड बाइंग देखी जा रही है ऑन पूनावाला फिनकॉप. सो बाई का रिकमेंडेशन है ऑन पूनावाला फिनकॉप करंट मार्केट प्राइस से, wherein you can put your stop loss at 474. Target is placed at 530 and 535. So I think we have shared one conviction delivery idea. So I think we can go with that. In the meantime, we can take few stock specific queries. Anuj, if you can run me through few queries. BPCL, I think BPCL is good, but I think rising crude price is not good for the downstream companies like BPCL, IOC and HPCL. इसलिए थोड़ा सा डाउनट्रेंड देखा गया है. So global Brent crude almost $90 per barrel trade कर रहा है, तो which is not positive for the oil marketing companies like BP, HP and IOC. So टेक्निकली अगर बात करें तो ट्रेडिंग पर से 575 एंड 560 ये सपोर्ट है बीपीसीएल में. अगर आप लॉन्ग है तो, अगर नया पोजीशन बनाना है तो कीप बाय नियर 570 लेवल्स, 570 और बिलो 570 करंट प्राइस पे. आई डाउट यू शुड एंटर इनटू इट. अगर आपका पोजीशन ऑलरेडी है तो कीप 570 एज योर स्टॉप लॉस एंड होल्ड योर पोजीशन. इफ यू वांट टू बाय फ्रेश, बाय क्लोजर टू 570 or 565 levels. एनएचपीसी हैज थोड़ा सा एक 95 पे एक रेजिस्टेंस बन रहा है. अगर टेक्निकली बात करें तो आज 95 का कल हाई करके आज 93 आया है, बट लोअर लेवल्स पे आई थिंक 92 90.80 और 91 शुड बी अ good level to enter again if you want to
बाय फ्रेश इन एनएचपीसी. थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग है आज कल. ऑलमोस्ट 5 दिन की रैली के बाद थोड़ा सा एक दिन का प्रॉफिट बुकिंग है. बट आई थिंक अगर फ्रेश एंट्री ले रहे तो 90.80 और 90 शुड बी अ गुड लेवल फॉर एनएचपीसी टू बाय. सॉरी. एंजल. एंजल वन ऑलमोस्ट नीचे से 2500 के लेवल से 2900 आया है. थोड़ा सा आज डाउन कल का बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न है. अगर टेक्निकली बात करें तो कल का लेवल कल का टेक्निकल पैटर्न थोड़ा सा नेगेटिव है वेर इन इट हैज ऑलमोस्ट एंगल्फ्ड इस प्रीवियस डेज गेन. सो बेरिश एंगल्फिंग एक बेरिश इंक्लिनेशन होता है और 5 डे के लो के नीचे आज ट्रेड कर रहा है तो थोड़ा सा और प्रॉफिट टेकिंग आ सकता है. वेर इन 2860 तक आई थिंक आ सकता है. बट वहाँ पे 2860 इज अ गुड सपोर्ट फॉर एंजल वन. अगर आप ले रहे हैं फ्रेश एंट्री कर रहे हैं तो 2860 शुड बी योर एंट्री पॉइंट. क्योंकि बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न बना है तो जब तक 32 to 22 उसके ऊपर नहीं जाता है तब तक बायस थोड़ा सा नेगेटिव ही रहेगा क्योंकि बेरिश एंगल्फिंग डेली पे बना है एंजल वन में. सो अगर पोजीशन नहीं है तो वेट फॉर अ बेटर अपॉर्चुनिटी एट 2860 एंजल वन. बैंक ले लो, यूको बैंक ले लो. उसमें डाला गोदरेज प्रॉपर्टीज. गोदरेज प्रॉपर्टीज ठीक है. मतलब ऑलमोस्ट 2200 से 2400 में की रैली हुई है. अभी थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन फेज है. बट आई थिंक 2475 के ऊपर अच्छा मोमेंटम आ सकता है वापस गोदरेज प्रॉपर्टीज में. सो अगर लॉन्ग है आप तो 2390 आपका स्टॉप रहेगा. अगर 2390 ब्रेक करता है तो थोड़ा सा एक और डाउन टिक आ सकता है जो ऑलमोस्ट 70-80 पॉइंट और डिप आ सकता है. सो अगर लॉन्ग है तो 2390 शुड बी योर स्टॉप इन गोदरेज प्रॉपर्टीज. और 2475 के ऊपर फ्रेश मोमेंटम आ सकता है फिर से गोदरेज प्रॉपर्टीज में. कितने पे लिया है? 1,155. Okay, no, I think you should wait. I think all the consumer durables, the likes of given the summer season is on, I think the AC demand for ACs and fans should improve going forward. So I think you should keep 1520 as your stop loss and hold your position. Havels. And above 1560 you will see almost 1620 का भी टारगेट रख सकते हैं in Havels. Zomato, I think it's a fantastic stock. लाइफ टाइम हाई पे है. आई थिंक इट शुड डू वेल. यू कंटिन्यू टू होल्ड. अगर नहीं है तो फ्रेश एंट्री भी ले सकते हैं. आई थिंक 185 का स्टॉप लॉस से फ्रेश एंट्री भी ले सकते हैं जोमेटो में फॉर टारगेट ऑफ ऑलमोस्ट 200. आई थिंक नथिंग टू वरी. अगर पोजीशन है तो होल्ड कीजिए. नहीं है तो यू कैन क्रिएट अ फ्रेश पोजीशन. एक पोल एंड फ्लैग जैसा ब्रेकआउट दिया है 187 के ऊपर. सो 185 का स्टॉप, 200 का टारगेट जोमेटो आई थिंक. Anuj, in the meantime, I'll take few YouTube queries as well. So I think I'll quickly run through few queries. Hind Copper, Gaurav Pandey. I think Hind Copper global commodities have been on all fire. I mean, metal, be it gold, silver, copper. So they are trading at almost lifetime high. So Hind Copper is a very good stock. Please continue to be long in Hind Copper. Then monetary policy is due to what can we expect? I think monetary policy is at 10 a.m. More than the policy stance, is the commentary would be more important. I don't think anyone is expecting any major rate में कुछ changes, but the stance on the CPI inflation as well as the commentary would be more important than the actual policy stance. Riddhi ji, pharma sector, I'll just check the chart.
think pharma is looking very good. I think the index has given what do you say, downward sloping almost ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दिया है 19,275 के ऊपर फिलहाल 19,360 है तो आई थिंक फार्मा सेक्टर इज लुकिंग गुड ओनली सो कंटिन्यू टू बी लॉन्ग इन फार्मा sector mainly via stocks like Divis and Sun Pharma. I think these are two preferred picks in the pharma space. Yes Bank, I think Shikhar ji, Yes Bank best avoided. I think there are many other banks which are at a far cheaper valuation than Yes Bank. So I think HDFC Bank and ICICI Bank should be the banks you should be in rather than in the penny stocks like Yes Bank. I think Tata Chemical, I'll just check the charts. इन केमिकल स्टॉक्स टाटा केमिकल एक ऑलमोस्ट एक दो तीन चार 5 दिन का एक नैरो रेंज ब्रेकआउट दे रहा है आई थिंक 1115 उसके ऊपर और तेजी बन सकती है तो आई थिंक अगर आप लॉन्ग नहीं है तो यू कैन क्रिएट अ फ्रेश लॉन्ग ऑल्सो इन टाटा केमिकल कीपिंग 10801 और 1090 एज अ स्टॉप लॉस ऑल कैश लेवल आई एम टॉकिंग अबाउट सो 20 रुपए का स्टॉप है तो अगर एक 1115 के ऊपर तो और फास्ट मूव आ सकता है वेरी यू कैन टेक द स्टॉक टू ऑलमोस्ट 1150 का टारगेट भी देख सकते हैं इन टाटा केमिकल सो आई थिंक इट इज गुड निर्मल जी आई थिंक टाटा केमिकल लुक्स गुड shankara I'll just check the chart Shankara, I mean Shankara Buildcon, right? Shankara has seen a very sharp run of almost 640 से 720 750 तक आ गया है सो एक आफ्टर शार्प रन अप एक कंसोलिडेशन फेज भी होता है तो आई थिंक फिलहाल एक कंसोलिडेट करेगा 2-3 दिन और and fresh leg of up move will start above 740 so I think after a almost sharp run up of 100 points odd in Shankara I mean at least 3-4 days of consolidation is required for the stock to start a fresh leg of another up move. So let the stock consolidate for next 2-3 days, and fresh breakout is above 740 levels in Shankara. I think intraday के लिए I think you can take Tata Chemical. You can take 10 almost 1% का stop and keep 2% as target. So 11,115 के ऊपर तो fresh थोड़ा सा और momentum आएगा in Tata Chemical. तो you can play Tata Chemical even Zomato for intraday. You can do Zomato 188, 187 का stop and keep 195, 197 as target. So I think these two you can play as intraday bet. But keep in mind RBI policy है थोड़ा सा swing index में रहेगा individual stock can do anything but let the event pass by and then take fresh positions after the event rather than preempting the event because Nifty can keep a swing of almost 70-80 points plus minus so let the event subside and post that you can take your positions in that. So I think I've answered few queries on YouTube. Anuj, we can take few queries here also. I think Prestige. Prestige Estate, I think almost 1000 से 1300 आ गया है ऑलमोस्ट 1350 के ऊपर ही ब्रेकआउट बन रहा है एस Prestige का chart is very similar to Shankara Buildcon wherein it's a sharp run up. So 4-5 days and a 2-3 days का consolidation move आना चाहिए Prestige में and a breakout above 1350 can take the stock to 1450 also. So wait for a breakout above 1350. Let it consolidate or let some dip. Let the stock have some cool off of almost 30-40 points. I mean 2-3% का थोड़ा सा cool off आने दो. Post that, I think the move will be sharper. Gale, Gale, right? Gale, yeah, it's a fantastic stock. I think you
मतलब यू डोंट नीड टू वरी अबाउट गेल इफ यू होल्ड एक साल का अगर आप व्यू ले रहे हो तो आई थिंक द स्टॉक कैन एटलीस्ट गिव टू 250 270 का भी प्राइस देख सकते हैं गेल में तो नथिंग टू वरी इन गेल इट्स अ फंडामेंटली गुड स्टॉक and it's a PSU stock. It's a high dividend paying stock. Almost 4-5% dividend yield भी आ जाती है stock में. I don't think you should worry. ट्रेडिंग पर से है अगर तो 180 शुड बी अ स्टॉप लॉस अगर इन्वेस्टमेंट है तो नथिंग टू वरी कीप एडिंग ऑल्सो अगर थोड़ा सा डिप आता है 170 के आसपास तो आई थिंक कीप एडिंग इफ यू होल्ड फॉर 1 ईयर आई थिंक 250 260 शुड बी अ टारगेट इन गेल. आई थिंक मोर देन द एनी रेपो रेट में कोई चेंज नहीं होगा जब तक आई थिंक यूएस में कोई चेंज नहीं होएगा पॉलिसी स्टैंड एज इन द कट इन रेपो रेट आई डोंट थिंक आएगा ये पॉलिसी में but the commentary would be very important wherein what forecast what is their CPI inflation forecast and accordingly how much they are comfortable so accordingly they'll take so I think uska commentary is more important rather than the actual policy stance so repo rate में कोई change नहीं होगा but the tone and how dovish or how mildly dovish he is accordingly market would react so swing रहेगा so it is very difficult to predict क्या swing रहेगा but the move would be both sides wherein we'll see a knee jerk reaction यहाँ पे the nifty can tank 50-60 points and again same tick it could recover also so it is very difficult to predict what how the market will react but the closing would be important how the market closes I think the market as a saying goes in equity market the market is opened by amateurs but closed by professionals so I think the closing is always important than opening. Yes. Even CDI idea we have shared I think Pune wala FinCorp. Yeah, yeah, yeah. Yeah. Okay. Perfect. So I'll in the meantime I'll answer a few queries on YouTube as well. Shikhaji has asked about RVNL. I'll just check the charts. RVNL, I think a fresh breakout will come about 270 levels. So I think 270 के ऊपर almost 10-15% का एक up move आ सकता है where it can take the stock to almost 280 290 levels. Wait for the breakout. Wait patiently for the breakout. एक single day tick आ सकता है the way the chart structure is there. एक सिंगल डे टिक आ सकता है 7-8% का सो वेट फॉर द ब्रेकआउट 272 के ऊपर एक 271 272 के ऊपर एक फ्रेश लेग ऑफ मूव इन ऑलमोस्ट आरवीएनएल इरकॉन आईआरएफसी ये तीनों स्टॉक्स में वेरी सिमिलर चार्ट पैटर्न्स है सो ब्रेकआउट के बाद आई थिंक 8-10% जैसा जो शिपिंग बिल्डिंग कंपनीज वेर इन मजगांव ये सब में जैसा अप मूव आया है 2 दिन पहले 8-10% का सिमिलर मूव कैन कम but wait for the breakout in RVNL about 272. Even Coal India, I think Goldie has asked. I'll just check the charts. Coal India is good only. I think 455 के ऊपर fresh up move आ सकता है. थोड़ा सा एक consolidation move है 445 का. 454 455 के ऊपर next leg of up move आएगा Coal India में. Vishal has asked Canara Bank. I think PSU Bank as a whole is looking very good. Can Bank, PNB, Bank of India. I'll just check the charts in Canara Bank. बहुत अच्छा है चार्ट आई थिंक अगर आप लॉन्ग नहीं है तो लॉन्ग कर भी सकते हैं 602 इज योर स्टॉप वेट फॉर 6 टारगेट ऑफ 630 ऑड आई थिंक द प्रोविजनल नंबर्स दैट दे हैव अनाउंस्ड सो फार the छोटे banks है माइक्रो आई थिंक साउथ इंडिया बैंक है they have been fantastic so I think you connect
continue to be long in PSU banks, PNB, Canada, Bank of India. I think सारे stocks I think buy on decline modes पे है, तो continue to be long in Canada Bank and even PSU banks. I don't. No, I don't think. Wait for the policy. Let the market digest what the governor has to say, and I think closing would be more important. But overall, if I have to sum up the session, I think Bank Nifty, Sensex Tino Index is buying on decline modes. पे है. 22 400 spot level Nifty and 22 300 spot level on Nifty. ये दो important support है. ऊपर में थोड़ा सा hurdle है, लेकिन next week I think Bank Nifty should outperform, and I think HDFC Bank will be the leader, and it will make sure that Bank Nifty hits the fresh lifetime high going forward next week, which is 48,636. So I think stay positive. I think buy on declines should be continued. So that is my final summary of it. Thank you so much, Anuj, and have a good trading session. Have a good weekend as well. Thank you for joining in. See you next week. I think we have a session at 2:30, so wherein Madhur sir, so live expiry, good. So please join us at 2:30, wherein Sensex expiry play will be taken by Mr. Madhur. So hope to see you then. Sure. Thank you so much.